Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, yesterday we have learned about the types of plastics. Now we are studying about the plastic and the environment. Is there any effect of this plastic on the environment? We will study. See students, when we are going in the market, what we will see? We are purchasing any food item. So what the shopkeeper will do, they will wrap in plastic और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स. यही करके देगा बेटा, वो आपको पॉलीथीन बैग में पैक करके दे देगा या प्लास्टिक में, किसी प्लास्टिक के रैपर में. ये फूड आइटम है, इसको प्लास्टिक से ऐसे कवर करके दे देगा, रैप करके. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कम इन द होम, यूज दैट फूड आइटम. उस फूड आइटम को यूज करेंगे एंड देन पुट इन द डस्टबिन. What we will do ultimately, plastic find its way to the garbage. उसको हम फिर वापस डस्टबिन में ही डाल देते हैं. So at the when we are purchasing anything, then what all the persons are doing, same thing. All are, when they purchase the things, the polythene bags, wrappers of the plastics, they throw in the garbage, throw in the dustbin. So day by day, this garbage is increasing. Now the main problem is that this plastic are non-biodegradable. ये प्लास्टिक क्या है स्टूडेंट्स? नॉन बायोडिग्रेबल है. अगर ये if it is biodegradable, then we will not suffer from any problem. See, it's take many years, means more than 1,000 years to biodegradable, to convert into to break into simpler substance. Simpler substance में break होने के लिए इसको many years, plastic takes many years. ठीक है. So a material which get decomposed through natural process. See, natural process कौन सा होगा बेटा? बैक्टीरिया क्या करेंगे, किसी भी चीज को, सपोज दिस इज ए पेपर, एंड पेपर को जब बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करेंगे, देन इट विल मिक्स इनटू द सॉइल, सो द सब्सटेंस, सो विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, या विच गेट डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट सब्सटेंस या दैट मटेरियल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. सो दिस इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो एनी अनियन पील हो गई, पील्स कोई भी लगा लो बेटा, पील्स छिलके हो गए सब्जी के, या आप ये लगा लो कोई भी वेस्ट वुड, ओके. देन एनी अदर थिंग्स, फ्रूट्स, अगर कोई फ्रूट्स खराब हो गए तो हम उसको डाल देते ना गार्बेज में. सो ऑल what they are biodegradable, but this plastic is non-biodegradable. Now what is non-biodegradable? A material which does not easily decomposed by natural process. कोई भी natural process के से द्वारा not easily decomposed. अगर वो decompose break down नहीं हो पा रहा है natural process के द्वारा, then it is non-biodegradable. If it is by natural process it is decomposed easily, then it is called biodegradable. So plastic, student, this main problem is that plastic is non-biodegradable. You will see in the chart, in the previous topic also I have explained this chart. You can see this one. Okay, so you can see here peels of vegetables and fruits. So they are, in my previous videos also I have explained this one. So these are fruits, leftover food stuff, all are biodegradable, but they take only 1 to 2 weeks. Now paper take 10 to 30 days. They are also biodegradable. Cotton clothes are also biodegradable. Woolen also biodegradable. Wood also biodegradable. But students, these synthetic fibers, you can say polythene, nylon, then you can say rayon, then you can say acrylic. All these substances are, students, non-biodegradable.
these are non biodegradable and they takes many years, several years to be, several years. So approximate time to degenerate होने के लिए कितना टाइम लगेगा? several years. So what we have to do, इनका यूज हमें कम ही करना पड़ेगा, अदरवाइज they are very very harmful. They are very harmful, students, for the environment. So plastic takes, what we told, that plastic takes several years to decompose. It takes several years. See, it is very harmful for the environment. It is not environment friendly. It is harmful for the environment. It creates air pollution. Then if water pollution, then you can say soil pollution. So air, when we burn this one, किसको? अगर हम प्लास्टिक को, अगर we will burn, see it does not completely burn easily. ये easily burn ही होगा ही नहीं. और जो synthetic material slow burning process in the synthetic material is very quite slow. जितने भी synthetic material students, इनका burning process क्या है? Very slow है, and it will not completely burn also. और lot of pollution when we burn this plastic. So प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो it produce some harmful gases. क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? हार्मफुल गैसेस. दीज हार्मफुल गैसेस आर दिस क्रिएट एयर पॉल्यूशन. क्या करेगी स्टूडेंट? ये इन्वायरमेंट में एयर को पॉल्यूट करेगी. सो एयर पॉल्यूशन क्या होगा इन्वायरमेंट में? एयर पॉल्यूशन. सी, एंड व्हेन दिस प्लास्टिक इज थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज, जब हम इसको वाटर बॉडीज के अंदर थ्रो करते हैं, यू हैव सीन वाटर को, वाटर के अंदर हम क्या डालते हैं स्टूडेंट्स? ये प्लास्टिक. सम पर्सन्स थ्रो प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, okay, in the water. Then what happened? This you have seen in the newspaper and others magazines, news, in the news also they are telling that this plastic, when the fishes, other organisms living in the sea, so when they digest this one, they are in जब इसको खा लेते हैं स्टूडेंट्स, they eat with the food. This plastic, some pieces of plastic they have eaten, then they block their respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देता है स्टूडेंट? उनको ब्लॉक कर देता है और अल्टीमेटली दीज ऑर्गेनिजम्स डाई. एंड सी दिस, इट इज गिवन हियर ऑल्सो, यू कैन से. Then when you have thrown any plastic materials, wrappers, all these things, you have thrown garbages all anywhere, and what you have seen students, the cow, buffaloes or any other organisms like you can say this goat, camel, dogs. So ये भी जब इसको food items को खाते हैं, this the food items which is thrown in the garbages, so what happen? This plastic material chokes the respiratory system of these animals. Chokes मतलब क्या कर देता है स्टूडेंट्स? ब्लॉक कर देता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ब्लॉक हो जाता है. और स्टमक के जो लाइनिंग है, इनके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अंदर एक इनर लाइनिंग बना लेता है. सपोज दिस इज द स्टमक, ओके. इस स्टमक के इनर साइड में ये प्लास्टिक क्या कर लेता है स्टूडेंट्स? लाइनिंग बना लेता है. इनर में एक पतली सी लेयर बना लेता है, एंड दैट्स वाइज there will be the death of that animals. So you can say that this is very very harmful. और अगर ये वाटर बॉडीज में हम थ्रो कर देते हैं, then drainage system also, drainage, water drainage system is also blocked. वाटर का ड्रेनेज सिस्टम भी क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड. आपने देखा होगा गांव में आप जाते हो तो वहां पे प्लास्टिक सबसे ज्यादा आपका बेटा, इफ यू विल सी इन योर विलेजेस हियर एंड देयर, then you can see maximum pollution is by only this plastic. So you will see, आप नालियों के अंदर देखोगे प्लास्टिक ने क्या है? वाटर सिस्टम को ब्लॉक कर रखा है. So water what happen? The water starts overflowing. वाटर क्या होगा? ओवरफ्लो करना शुरू करेगा. ओवरफ्लो क्यों स्टूडेंट्स करेगा? बिकॉज
द वाटर जो सिस्टम हमने बना रखा है ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज ब्लॉक्ड बाय दिस ड्रेनेज सिस्टम इज ब्लॉक्ड बाय दिस प्लास्टिक. अब प्लास्टिक उसको ब्लॉक कर देगा वहां से, तो वाटर विल नॉट पास फ्रॉम, वाटर यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा. यहाँ पे अगर प्लास्टिक इसको ब्लॉक कर देगा, दिस वाटर विल नॉट पास ऑन द नेक्स्ट साइड, and what will happen, it will start overflowing and it will cause many disease also. The person will suffer. Here the mosquito will spread. Okay, now the water will become stagnant. मतलब पानी रुक जाएगा बेटा. If water will stagnant, पानी अगर यहाँ पे रुकेगा तो what happen, then mosquito starts breeding here. मस्किटोज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रीड करेंगे and then the disease malaria will spread. Malaria disease will spread. So we have to think, what we have to think, that we have to use it properly, not that everywhere we are started using this one. You can see in this one here. So okay, throw the wrappers of chips, biscuits, other eatables on the road and in the parks or the picnic places. So we should not think twice before doing so. So we should not think twice before doing so. तो हमें सोचना तो चाहिए कि why we are throwing here. What is, we are not a responsible citizen if we are doing this one. So as a responsible citizen, throw it in the dustbin. Number one, dustbin, and try to use less and less plastic. If we will use less and less plastic, students, then ultimately this problem will be sorted out. See what we are doing, that plastic is today's daily need, but if we will use it other alternate also along with the plastic. हम मार्केट में जाएंगे, सोचते हैं कि प्लास्टिक के मेटेरियल में अपने आप शॉपकीपर डाल के देगा. नो, what we will think, we will have to carry the bags like earlier our foreparents were carrying, grandparents, okay, cotton और जूट बैग्स. आपने देखा होगा आपके दादाजी नाना जी हमेशा जूट के बैग, कॉटन कपड़े के बैग्स भी होते थे, क्लोथ्स के बैग्स भी फॉर शॉपिंग. बट नाउ द पीपल्स नेवर दे कैरी एनीथिंग. दे टेल द शॉपकीपर लेट पैक दिस वन, only the 2 words, but these 2 words, students, these 2 words create a big problem for the environment. So the biodegradable and non-biodegradable waste should be what we have to do. So one is, we have to, as far as possible, we have to use the bags of cotton or jute. Second thing what we have to do, the biodegradable and non-biodegradable substance should be collected separately. इनको हमें separately collect करना है ताकि biodegradable, what we will do, biodegradable substance को अगर आप, if we will dig some, what we will do in an empty place, what we have to do students, आप थोड़ा सा एक गड्ढा खोद के जितने भी यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है आप उसको गड्ढे के अंदर रख के एंड देन पुट सॉइल ओवर इट. देन आफ्टर 3 to 4 months after, what we will see, there is nothing left. Why nothing left? Because all are decomposed. वो सब क्या हो गए स्टूडेंट्स, decomposed हो गए. बट if the substance are non-biodegradable, अगर non-biodegradable substance है, so we have to send this non-biodegradable substance for recycling. Recycle करने के लिए we will send this plastic waste for the recycle. Okay, so this is the best. So practice this is in your homes. We have to do, keep 2 dustbin. Okay, one is blue and other is green. Students, always ये क्वेश्चन भी आता है, ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन. ग्रीन इज फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मीन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल, एंड ब्लू बिन्स क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बिन और ग्रीन बिन. सो ग्रीन बिन इज फॉर, डस्टबिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रीन बिन इज फॉर द सब्सटेंस विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड द ब्लू बिन, दैट ब्लू बिन कौन सा डस्टबिन होता है, इन विच वी विल यूज द मेटेरियल विच आर बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल वी विल थ्रो इन द दिस, यू कैन से वन केव, जो आपने गड्ढा खोद रखा है आपने उसको. सो वन, दैट वन यू विल यूज and put in that one, and the which is blue bin up send it for the recycling, and green bin put the material in this open place, and
open place and dig it near about 2 to you can say near about 3 feet. 3 feet तक आप इसको गड्ढे को खोद सकते हो स्टूडेंट्स. एंड देन put some soil on over it, and 3-4 month they are converted, they are all, you can see nothing is left behind, only they are converted into soil, and that soil is also rich in minerals. वो soil क्या होगा students? Rich in minerals. उस मिट्टी के अंदर ज़्यादा minerals होंगे, because the substances which are made up of different, the substance which we have put in this one, that are all the substances have different components from which they are made up of. So they have different type of minerals, so that are mixed into the soil. Then what we will see, and this blue bin is sent for recycling. Now what we will see here, that now you can see at your home also what are the things that are for recycled, like plastic tiffins, lunch box, toys, then any type of water bottles. So all these substances, like small dolls. So ऐसे ही कोई plastic mug, bucket. So there are different type of substances of plastics that you can send for the recycling. So as a responsible citizen, what we have to do, we have to follow this 5R principles. What are 5R principles, students? 5R principles we have to follow. One is reduce. Reduce कैसे होगा students? Suppose I have brought you can say a packet or a bottle in which there is, you can say, Bournvita. ओके, ये प्लास्टिक मग लेकर जिसके अंदर बॉर्नविटा मिला था. ओके, आफ्टर यूजिंग दिस बॉर्नविटा, जब मैंने ये इसको यूज कर लिया, नाउ इट बिकम एम्प्टी, ये खाली हो गया. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल ब्रिंग द बॉर्नविटा, दैट इट विल नॉट इन द बॉटल, यू कैन परचेज इट ऑफ इन ए प्लास्टिक की. आप कोई भी जो प्लास्टिक में पैक्ड आता है, प्लास्टिक के पॉलिथीन टाइप में पैक्ड आएगा स्टूडेंट्स, उसको आप, दैट इज चीपर भी होगा बॉटल से. जो आप किसी कंटेनर में लेकर आते हो दैट इज कॉस्टली, और आप किसी पैकेट में पैक लेकर आते हो दैट इज चीपर. सो नाउ यू ओपन दिस वन एंड पुट इट इन दिस वन, in the bottle, or you can say in a container. Now you have again used it. Now this container you are used for storing other items also. अदर आइटम को स्टोर करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. रिड्यूस, आपने उसको यूज को क्या कर दिया, ये नहीं कि आपने यूज किया और उसको थ्रो कर दिया. यूज और थ्रो करने की जरूरत ही नहीं है. थ्रो करने की जगह उसको किसी और चीज के लिए हम अदर सब्सटेंसेस वी कैन कीप इट इन दिस वे. नाउ सो आपने इसका यूज किया, रिड्यूस कर दिया, इसका यूज कम कर दिया. रीयूज, अब इसमें आपने इसका रीयूज भी हो गया. रिसाइकल, जब ये 2-3 बार आप इसको यूज कर दो तो आप इसको रिसाइकल करने के लिए यू कैन गिव इट. एंड रिकवर एंड रिफ्यूज, आप उसको रिकवर, दोबारा भी इसको कवर कर सकते हैं. रिफ्यूज और सेकेंड मेन इज रिफ्यूज, आप प्लास्टिक की थिंग्स को रिफ्यूज कर दो. ठीक है, कम से कम. लाइक इफ यू हैव परचेज्ड ए गिफ्ट, आपने गिफ्ट परचेज किया, नो नीड टू रैप द पैकेट, उसके ऊपर पैकेट के ऊपर कवर करना जरूरत नहीं बेटा. इसको रैपर करने के लिए इसको ये कि नहीं कि इसको अच्छी तरीके से रैप करके हम लोग किसी को देंगे. ठीक है, यू कैन गिव इट सिंपलर वे ऑल्सो. सो आपने इसको पैकिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज किया, आपने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. सो दिस 5 प्रिंसिपल इफ यू विल यूज, देन इट विल बी फॉर अस what we have to do, that responsible citizen होने के नाते we develop habit which is environment friendly. So if we will develop this habit, it is good for us and environment.
what we have to do, students, that do not throw plastic bags in water bodies or on the road. This is the very important point. Take a cotton carry bag or jute bag for shopping. Third is try to minimize the use of plastic. जितना कम कर सकते हैं यूज प्लास्टिक को, कम से कम. It should be minimum. Okay, so use a steel lunch box instead of plastic one. So as a responsible citizen, if you are thinking about the environment, then apply all these things. Okay, we have completed this chapter. As a responsible citizen होने के नाते what we have to think, students, that कभी भी प्लास्टिक के ज़्यादा चीज़ों को see when at night time, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स गाड़ी है. ओके, हमने गाड़ी को क्या किया, स्टोर उसको बंद करके रख दिया. नाउ नेक्स्ट डे जब हम गाड़ी की विंडोज़ को खोलते ही हम उसके अंदर एसी चला के बैठ जाते हैं. दिस इज़ नॉट ए, इफ़ यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और इफ़ यू आर केयर ऑफ योर हेल्थ, आपने अपनी हेल्थ की ध्यान रखते हो, सो देन डोंट सिट इन साइड फ्लैट. फर्स्ट 5 मिनट के लिए सारी गाड़ी की विंडोज़ खोल के छोड़ दो. देन लेट, बिकॉज दिस because students, plastic release harmful gases. Now students, today's question, I am asking today's question that green bins and I told blue bins. So my question is, what is my question, students? That green bins are used for number A, for non-biodegradable, non-biodegradable substances used for non-biodegradable substance. B, for biodegradable, DEGRADABLE, for biodegradable. C, both A and B, or D is student none of these. So green bins are used for non-biodegradable substance, biodegradable, both A and B, and none of these. Me the correct response. The name of the students are that 8th class students. Name is those who have given the correct response. So those who have given the correct response, the answer is students thermosetting. Melamine and bakelite are example of thermosetting. See, bakelite में single L आएगा. Yesterday by mistake I have written double L. So those who have given the correct response, thermosetting, they are Priyanshu. I am announcing the name. Priyanshu, very good beta. All the students, those who have given me the correct response. Second is Naresh. Third response was given by Akash. Fourth response by Lokesh. Fifth by Akhil. Congratulations, beta. 1 or 2 students have all these students have given the correct response. So my heartiest congratulations to all the students who have given the correct response. I am telling again, you students, watch my videos, listen it carefully, don't do rectification. हमारी साइंस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बेटा if we will follow these methods. Now we will discuss 4-5 questions of this activity, and tomorrow we will do the other questions also. So what is in the activity, students? That let's
Keywords we will discuss tomorrow, day after tomorrow, and now we will discuss the first question. What is first question? Explain why some fibers are called synthetic. Why some fibers are called synthetic? Because they are made by human being. They are made by human being. So they are made by, आप man भी लिख सकते हो या human beings. So that's why they are called, some fibers are called synthetic because they are made by, आप man लिख दो, they are made by man. So यह human being भी सही था. Now what is the next question? What is the next question, students? Rayon is different from synthetic fiber. Why rayon is different? Because it is obtained from wood pulp. Answer B is correct. See, woven like those of natural fibers. It fibers can also be woven like those of natural fibers की तरह नहीं है ये. Why? Because here artificial fibers are also used. Silk like appearance. Silk like appearance तो इसमें है, but different कैसे है ये? This is like this one. So what is the third? Third is, students, fill in the blanks. Synthetic fibers are also called, what we also call synthetic fibers? Man-made or artificial. क्या आएगा students यहाँ पे? Man-made, man-made और artificial. ARTIFICIA. Do this exercise in your book. Fourth is, synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. क्या बोलते हैं बेटा उनको हम? Petrochemical. CHEMICAL. Petrochemical. Now what is the next question? Now explain why plastic containers are favored for storing food. So students, this question, nylon fibers, give example which indicate that nylon fibers are very strong. So कौन से इसके examples होंगे students? Nylon fibers are very strong. Which points I will give? That they are used for making fishing nets. They are used for making fishing nets and parachutes. CHUTES, parachutes. So they are used for making fishing nets and parachutes. Fishing nets और parachute बनाने के लिए यूज करते हैं. Number 2 point, students. Which is the next one? They are also used for making ropes. Number 2, they are also used for making ropes, which is used. They are also used for making ropes, which is used for climbing, which is used for ropes for climbing rocks. KS. So they are also used for making ropes. क्यों? Because which is used for climbing rocks. रॉप्स बनाने के लिए यूज करते हैं. अभी रॉप्स कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स को क्लाइंब्स करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. So thank you students for watching my videos. Do all these things I have explained in any notebook or any in your FAIR notebook. And students, next exercise I will discuss in my next video. Thank you students. So thanks.